प्रणाम समस्त को जय जगन्नाथ फ्रेंड्स देखो जो मैंने प्रिपरेशन करुँचर एसएसबी टीजीटी एग्जाम 2026 से सोशल साइंस रो किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं आसी तो आम डिस्कसन करवा तेणु सोशल साइंस रो वेटेज आपंकर अधिक रोचे जोटा कि आपंकर 50 टी क्वेश्चन आसो बुझीगला तेणु जी जिते भल कर से अनुसार गोटे सीट तापाई रिजर्व रहिबो। तो चैनल जदि नुआ अच्छा चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे सांग मानक शेयर करेंगे वीडियो गोटे गोटे लाइक करेंगे जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल जॉइन करना आम टेलीग्राम चैनल आपण मैंने जॉइन कर जातु क्यूआर कोड को सीधा सड़क कौन करूँ स्कान कर दिखाँ तो स्कान करके आपण मैंने जॉइन करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में लिंक देती क्लिक करके जॉइन करेंगे कि आप टेलीग्राम रे @ देके यहाँ को भी सर्च कले आपंकर आसीज ठीक अच्छे कि आपण मैंने स्कान करके भी जॉइन करेंगे जदि जॉइन करुँच फायदा कौन हम ना आपण मानकर पीडीएफ आपण मानक मिल ता सहित डेली बेसिस रे क्वेश्चन आम पुल करूँ ता सहित आपण जहाँ भी एजुकेशनल नोटिफिकेशन आसीबो सर्वप्रथमे आपण माने पाइजिबे एवं ता सहित मु आपण मानक कहि रखुची जदि आपण माने सीरियसली प्रिपरेशन करूचंती आपणकर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई मु आपण मानक सजेस्ट करिवि गोटे मिनिमम प्राइस रे आम सहित आपण माने जॉइन करि परिबे। मिनिमम प्राइस कहले मात्र 300 टंका ऑल ओडिसा आपण बुली आसीबे टीजीटी पाई एतिक कम टंकार केही भी आपण मानक प्रैक्टिस करूनांती केही भी आपण को क्लास प्रोवाइड करूनांती तो क्लास रे कोन रहिबो ना आपण माने लाइव प्लस रेकॉर्डिंग क्लास आपण माने पाइबे। बहुत सारा पिला भाबंती जे केवल हमरे एठी एमसीक्यू प्रैक्टिस होउची ना आपण माने सबु टॉपिक रो थ्योरी पाइबे जोटा कि आपण मानन को मिली जिवो लाइव प्लस रेकॉर्डिंग एवं मु कहि रखिबी सोशल साइंस रे आपण मानकर विद्यासार पढौचंदी आपण क्लास थोरुटी आसिक देखंतु जानि परिबे जे प्रकृत रे फंडामेंटल जिंसडा कोन जोटा कि सर आपण मानन को पूरा बेसिक रु एडवांस लेवल पर्यंत पढौचंदी बेसिक रु एडवांस लेवल पर्यंत पढ़ाऊँच जोटा कि सिलेबस भितर रही सिलेबस को आप मैच करके पढ़ी पारे ता सहित जहाँ भी थ्योरी क्लास करेंगे तार टॉपिक वाइज एमसीक्यू मैक्सिमम जगह आपको प्रोवाइड करेंगे जार कि वीडियो रही पीडीएफ भी रही ता सहित स्टडी मटेरियल्स आपण माने फोल्डर वाइज आपण मानकर पाइजिबे मिक्स टाइप रे एमसीक्यू आपण मानकू 5000 रु 6000 एमसीक्यू जोटा कि पूरा एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड एमसीक्यू आमर नोटिफिकेशन आसिले आम स्टार्ट करूँ तेणु जब जॉइन करार अच्छी एबे ही जॉइन कर जाओ कौन सी भी एप्लिकेशन ना प्राइवेट वेबसाइट प्राइवेट टेलीग्राम चैनल तो यही नंबर रे मते व्हाट्सएप करेंगे 8917270933 यही नंबर रे मते व्हाट्सएप कर दिंतु मुझे डिटेल्स कहीदेवी जीवा स्टार्ट करवा। आज प्रथम क्वेश्चन Which rock edict describes Ashok's first धम्म यात्रा to Buddha Gaya and Buddhi tree? वीडियो को शेयर करो पीडीएफ पाइजिब निश्चित भाव में तो कुह करेक्ट आंसर कौन हम समस्त को मोर प्रणाम। Which rock edict describe Ashok's first धम्म यात्रा to Buddha Gaya and Buddhi tree? करेक्ट आंसर कौन हम वेरी गुड बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हम जोड़ा हूँ मेजर रॉक एडिक्ट आपंकर केते रोचे 8 रोचे मेजर रॉक एडिक्ट 8 आपंकर रहा जो कि अशोकंकर जर्नी विषय रे वर्णना करा जायछि अशोकंकर जर्नी विषय रे वर्णना करा जायछि रॉक एडिक्ट 7 अशोकंकर जर्नी बाबद रे वर्णना करा जायछि रॉक एडिक्ट आपनकर 8 रे हला तेणु ऑप्शन नंबर कौन हम डी अब करेक्ट आंसर एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ हिज धर्म यात्रा एवं इट रिफ्लेक्ट्स द अर्लियर रॉयल प्रैक्टिस ऑफ बिहार यात्रा जोटा हूँ प्लेजर टूर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण मानक पचारिछि द नीतिसार ऑफ कामंदक ऑल्सो नोन एज कामंदक्य नीतिसार
वाज कंपोज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ का पीरियड रे एटा आपनकर कंपोज हेइतला पचारिची आंसर चेक करची तो करेक्ट आंसर कोन हबो नीतिसार ऑफ कामंदक कहा समय रे करेक्ट आंसर कोन हबो तो करेक्ट आंसर जदि आमे कहबा एटा गुप्त टाइम रे हितला बुझी पारछ कि नहीं गुप्त पीरियड रे आपन करे हितला तेनु इट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय चाणक्यस अर्थशास्त्र एंड दिस टेक्स्ट डील्स प्राइमरीली विथ स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल मोरालिटी क्लियर बुझा पड़ुची आगो को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन हु among the following was the first writer to use Urdu as medium of poetic expression जी जिते भल कर सोशल साइंस रे तार सिलेक्शन सेते शीघ्र मन रखि कौन हम करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करो बढ़िया आंसर बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर अमीर खुसरू आमे कहि परिबा जे कि यूज करथिले उर्दू फॉर पोएट्री एवं से जने सूफी म्यूजिशियन पोएट एवं स्कॉलर थिले एवं तांको कुआ जाय कोन फादर ऑफ कव्वाली कोन कुआ जाय तांको कुआ जाय फादर ऑफ कव्वाली तांको फादर ऑफ कव्वाली बोली कुआ जाय Which of the following sultan led a campaign against Jajnagar? Important question correct answer कौन हबो करेक्ट आंसर जदि आमे कहबा फिरोज शाह तुगलक तेणु फिरोज शाह तुगलक लेड द मिलिटरी एक्सपेडिशन टू जाजनगर जोड़ा होची आपनकर उड़ीसा तेणु द कैंपेन एम टू कैप्चर द एलिफेंट एंड असर्ट द सुपरमेसी ही सक्सेसफुली मेड द रूलर ऑफ जाजनगर सबमिट एंड ऑफर ट्रिब्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन बुलंद दरवाजा was built in which of the following years बुलंद दरवाजा जो माने थ्योरी पढ़िबा पई चाहुचो जॉइन करि परिबो हम सहित करेक्ट आंसर कोन हबो करेक्ट आंसर हूँ 1572 हम करेक्ट आंसर तेणु बुलंद दरवाजा आपणकर 1572 क्या द्वारा होता मुगल एम्परर अकबर बुझेगा कि नहीं कौन पाई ना टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर गुजरात इट इज सर्व्स एज द मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट फतेहपुर सिकरी आगो को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following root आईन ई अकबरी एंड अकबरनामा तो समस्ते कहि परिबो जो माने जॉइन करिया पई चाहुचो जॉइन करि परिबो हम सहित जो माने जॉइन करिया पई चाहुचो कौन हम करेक्ट आंसर
आईन इ अकबर अकबरी एंड अकबरनामा निश्चित भाव में आम कहीपर अबुल फजल इज द करेक्ट आंसर अबुल फजल बुझेगा कि नहीं एंड आईन इ अकबरी इज एक्चुअली द थर्ड वॉल्यूम ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अकबरनामार थर्ड वॉल्यूम होची आईन इ अकबरी नेक्स्ट हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज जिंदा पीर कहा को जिंदा पीर बोली कहा जाए कहा को जिंदा पीर बोली कहा जाए 7 नंबर क्वेश्चन रैपिडली कमेंट करो जिंदा पीर बोली कहा को कहा जाए जिंदा पीर जिंदा पीर कथा जदि कहबा जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाए क्या कहा जाए औरंगजेब को कहा जाए जोटा हूँ लिविंग सेंट यही जो टाइटलटा कौन पाई ना टू इज सिंपल लाइफस्टाइल एंड स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू द इस्लामिक लॉज बुझेगा कि नहीं तेणु तांको कौन कहा जाए जिंदा पीर बोली कहा जाए नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिशंस इन द ब्रिटिश इरा had made recommendation for a change in pattern of directly introduced under the Government of India Act 1919 किए कहब करेक्ट आंसर कौन हम तो करेक्ट आंसर जदि आम कहबा साइमन कमिशन इज द करेक्ट आंसर साइमन कमिशन तेणु साइमन कमिशन रिव्यूड द वर्किंग ऑफ कौन 1919 एक्ट एवं इट वाज फॉर्मली नोन एज इंडियन स्टैट्यूटरी कमिशन मन रखिबो तो कौन कह जाए स्टैट्यूटरी कमिशन इट रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टरी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन provinces next question on which among the following dates execution of Bhagat Singh took place किए कहबो 9 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम तो करेक्ट आंसर जदि आम कहबा मार्च 23 1931 भगत सिंह ता सहित हूँ सुखदेव आउ के राजगुरु जोटा कि एक्जिक्यूटेड ऑन मार्च 23 1931 एवं जोटा को कौन कह जाए शहीद दिवस रूप में पालन करा जाए कौटी तांको फांसी दिया जाइतिला लाहौर जेल रे कहाँ को कहा जाए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा को कहा जाए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा को कहा जाए पचारिछि वेरी गुड बहुत बढ़िया करेक्ट आंसर होची बाल गंगाधर तिलक को कहा जाए बुझला नहीं ताकू किए देइथिले एटा ना बाय ब्रिटिश ऑथर किए वैलेंटाइन सिरोल देइथिले एवं तांकर गोटे पॉपुलर स्लोगान जोटा बहुत थर परीक्षा हाई स्कूल एग्जाम रे पकईछि स्वराज इज माय बार्थ राइट एंड आई शैल हैव इट एटा बहुत थर आपनकर एग्जाम रे आसी बहुत थर एग्जाम रे आसी बुझला आगो को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जॉइन करने जदि चाहूच आम सहित जॉइन करि परिबो थ्योरी प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस मिक्स टाइप एमसीक्यू प्लस पीडीएफ मात्र 300 टंका मार्केट रे बुली आसीबो
बुझीपार कि नहीं क्लास थ्योरी क्लास थोड़े देखिक कहब तापर कमेंट कर बुझीगला जदि जॉइन करने चाहूँ ये नंबर रे मत व्हाट्सएप कर नंबर रे चलो नेक्स्ट on which date the mutiny of 1857 started from Meerut किए कहब करेक्ट आंसर कौन हम तो करेक्ट आंसर आम कहीपर 10 मई 1857 बुझेगा कि नहीं नेक्स्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज फाइनली विड्रो इन केबे ताको विड्रो करनिया गला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कथा जदि आमे कहबा एटा केबे ताको विड्रो करनिया गला एटा विड्रो हैला केबे एप्रिल 1934 रे विड्रो हैला एप्रिल 1934 कथा जदि आमे कहबा तेणु द मूवमेंट लॉस्ट द मोमेंटम आफ्टर द फेल्युअर ऑफ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एवं फॉलोइंग दिस गांधी टेम्पोररली resigned from the Indian National Congress to focus on constructive work hela next question under which among the following treaties Clive had secured the grant of Diwani of Bengal, Bihar and Odisha from Mughal Emperor Shah Alam कौन बेटी करेक्ट आंसर ट्रेटी ऑफ अलाहाबाद आम कहीपर जोटा कि 1765 ग्रांटेड द दीवानी राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी इट वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर दिस गैव द ब्रिटिश टू राइट टू कलेक्ट द टैक्स डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ बेंगल बिहार एंड ओडिशा क्वेश्चन कही द क्वाइट इंडिया मूवमेंट वाज supported by जो माने थ्योरी पढ़ा चाहूच टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने चाहूच जॉइन कर 300 टंकार तो करेक्ट आंसर कौन बेटी करेक्ट आंसर होची नॉन ऑफ देम कहीं भी नुहे बुझेगा कि नहीं द कम्युनिस्ट पार्टी अपोज इट ड्यू टू द सोवियत अलायंस विथ द ब्रिटेन जोटा कि वर्ल्ड वार 2 हिंदू महासभा आउ प्रिंसले स्टेट्स आल्सो चूज टू स्टे अवे फ्रॉम द मूवमेंट क्वेश्चन कही व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट आर करेक्ट किए कहब या भितर कौ स्टेटमेंट आपनकर करेक्ट अच्छी आराम से कह
करेक्ट आंसर होची 1 एंड 3। तेणु जो इंटरनेशनल डेट लाइन रही एटा परफेक्टली स्लाइट लाइन नुहे, एटा गोटे जिगजैग टू अवॉइड द स्प्लिटिंग कंट्रीज इनटू 2 टाइम जोन्स। तापरे कहिछि क्रॉसिंग द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मीन्स यू add a day to your calendar। 1 and 3 of a correct answer। Which among the following statement is true regarding the international date line? किए कहबो करेक्ट आंसर कोन हबो? It is 180 degree longitude, na straight line, na big circle, na it is a curved line beyond earth। (180 degree longitude) तेणु द इंटरनेशनल डेट लाइन रफली फॉलोज 180 degree मेरिडियन। तेणु इट सीड्स हाफ वे राउंड द वर्ल्ड फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। तेणु इट डेविएट्स फ्रॉम 180 degree मार्क इन प्लेस टू एकोमोडेट द पॉलिटिकल एंड टेरिटोरियल बॉर्डर। टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल बिकॉज कौन भाई? कौन हम करेक्ट आंसर किए कहबो? ऑप्शन नंबर डी अब करेक्ट आंसर। प्रोग्रेसिवली लेसर द सोलर एनर्जी पर यूनिट एरिया फॉल्स ऑन द अर्थ सरफेस। तेणु जदि कहबा द कर्वेचर ऑफ अर्थ कॉजेज सोलर एनर्जी टू स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया एट द पोल्स। तेणु दिस इज द प्राइमरी रीजन फॉर लैटिट्यूडनल टेम्परेचर ग्रेडियंट। तेणु द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन्स रे बिकम हाईली ऑब्लिक नियर द पोल्स। The hill range that separates the state of Manipur from the state of Nagaland is known as ता कौन कहा जाए? बढ़िया ऑप्शन नंबर सी हम जोड़ा हूँ बराइल हिल्स। तेणु बराइल रेंज सेपरेट्स मणिपुर फ्रॉम नागालैंड। इट इज वन ऑफ द मेजर माउंटेन रेंज इन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट एंड इट एक्ट एज ए वाटर शेड बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर सिस्टम। मन रखिए परीक्षा पड़ी पारे। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स कहा को सेपरेट करूची? नाइन डिग्री चैनल सेपरेट्स वेरी गुड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय है। तेणु इट इज नेम्ड बिकॉज it lies on 9 degree line of latitude north of equator। तेणु it is a crucial navigational channel for the merchant ships in Arabian Sea। the average annual temperature of a meteorological station is 26 degree Celsius। its average annual fall होची 63 सेंटीमीटर एंड annual range of temperature होची 9 डिग्री। ताले कहिची
এটা কাহা বাবদরে কুয়া যাଉଛି আହ୍ଲାବାଦ ବାବଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଚେନ୍ନାଇ ବାବଦରେ କୁହାଯାଉଛି ଚେରାପୁଞ୍ଜି କଲକତ୍ତା यार पीडीएफ मु टेलीग्राम रे आपण मानकु प्रोवाइड करिवि प्रणाम प्रणाम समस्त को एटी का बाबद रे कुआ जाउची एटा चेन्नई बाबद रे आपनकर कुआ जाउची कारण एटा जो देइची कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेन्नई तेणु चेन्नई एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट तेणु इट रिसीव्स बल्क ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून इन लेट ऑटमन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पूर्व मु कहि रखुची जदि आपण माने कॉन्सेप्ट बुझिबा पई चाहुचंती कॉन्सेप्ट जोटा कि पूरा बेसिक रु हाई लेवल पर्यंत आमर विद्यासार सोशल साइंस पढ़ाउचंती जॉइन करि परिबो थ्योरी पाइबो टॉपिक वाइज एमसीक्यू पाइबो पीडीएफ सबुतरे अवेलेबल तो निहाती भाबरे मात्र 300 टंका रे जॉइन करि परिबो एई नंबर रे मते व्हाट्सएप करि परिबो 8917270933। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन The extreme of temperature between summer and winter is quite low in southern part of peninsular India mainly because कौन पर एटा ही था जे कहबो ऑप्शन नंबर ए अब करेक्ट आंसर द adjoining oceans moderate the temperature देखो the peninsular regions climate is heavily influenced by the surrounding water bodies तेणु water heats up and cools down slower than land तेणु creating a moderating maritime effect तेणु this result in a low diurnal and annual range of temperature। आगो को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर व्हिच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लैटराइट सॉइल डेवलप सर निहाती सॉइल पढ़ाई कोठा बरे करेक्ट आंसर एटा भी ए हबो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट तेणु देख लैटराइट सॉइल फॉर्म अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल तेणु इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हेवी रेन वाशेस आउे सिलिका तेणु लिविंग बिहाइंड द आयरन एंड एल्यूमिनियम तेणु दे आर टिपिकली फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। Iron ore mines are located in कोड देखा जाए आयरन ओर माइंस डी सिंहभूम जोटा तुम झारखंड रे अच्छी मयूरभंज जाला उड़ीसा आउटा हूँ बस्तर जोटा हूँ छत्तीसगढ़ रे पाइब द पेनिनसुला रिवर्स व्हिच डू नॉट जॉइन द अरेबियन सी आज पीडीएफ रो पासवर्ड @
नाइन डैश डैश मन रखी था आउ दीटा मु कहबी नाइन डैश डैश तो करेक्ट आंसर होची गोटा होची गोदावरी आ गोटे कृष्णा तेणु गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो ईस्ट वार्ड्स एंड एम्प्टी इनटू बे ऑफ बेंगल तेणु नर्मदा आ जो ताप्ती रहा यहाँ हूँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर जोटा कि जॉइन कर अरबियन सी को तेणु ईस्ट वार्ड फ्लो इज डिटेक्टेड बाय द टिल्ट ऑफ डेकान प्लेट्यू क्वेश्चन कही अमरावती भवानी हेमावती आउट अच्छी काबिनी यही जो कही कौ नदीर ट्रिब्यूटारी बोली पचारि गोदावरी आंसर आसुची करेक्ट आंसर हूँ एगुड़ाक हूँ कावेरी है तेणु कावेरी बेसिन एक्सटेंड्स ओवर तमिलनाडु कर्णाटक केरल आ गोटे हूँ आपणकर पुडुचेरी एवं हेमावती आ गोटे जो काबिनी एटा ओरिजिनेट इन वेस्टर्न घाट अच्छा एज पर द डाटा रिलीज 2011 सेक्स रेशियो इन रूरल एरिया इज लेस देन द अर्बन एरिया किए कहि परिबो करेक्ट आंसर कोन हबो प्रियंका परिडा एबे आसुच 26 टा क्वेश्चन गलानी 5 times, 4 times, 3 times, 2 times. टू टाइम्स हम यार करेक्ट आंसर 2 टाइम्स है तेणु अर्बान माइग्रेशन हेविली इंपैक्ट दीज डेमोग्राफिक रेशियो तेणु रूरल एरियाज जनरली सी आउट माइग्रेशन ऑफ मेल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स ग्रोथ रेट कहले आमे कौन बुझिबा हौ निवेदिता मैडम डी राकेश भाई डी करेक्ट आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी हम जोटा होचे डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट आउट होचे तमरो डेथ रेट व्हाट वाज द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्ना कार्टा टू ब्रिंग द पावर्स ऑफ किंग अंडर द लॉ टू मेक द पावर ऑफ किंग्स बियॉन्ड द लॉ to limit the power of barons none of these option number A to bring the powers of kings under rule तेणु मैग्ना कार्टा एस्टाब्लिश द प्रिंसिपल दैट एवरीवन इंक्लूडिंग द किंग इज सब्जेक्ट टू द लॉ इट वाज साइंड बाय द किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड जोटा कि 1215 रे हमें कहि परिबा एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिविल लिबर्टीज Which among the following articles gives the power to the central government to take
primitive action to protect any state against external aggression in internal disturbances. जो मैंने जॉइन करना जॉइन करी जाओ। तो करेक्ट आंसर होची आर्टिकल 355। तेणु इट इज सर्व्स एज द जस्टिफिकेशन फॉर सेंट्रल इंटरवेंशन इन स्टेट अफेयर्स ड्यूरिंग द क्राइसिस। आर्टिकल 356 deals with the president's rule if constitutional machinery fails. Who among the following was the constitutional advisory to the Constituent Assembly? B.N. Rao. He prepared the initial draft in Indian Constitution. He also India's representative of the UN Security जो रही आमर सिक्यूरिटी काउंसिल। जदि थियोरी पढ़ापी चाहूच जॉइन कर आम सहित ए नंबर में मत व्हाट्सएप कर विद्यासागर क्लास आसिक थोड़े देख तापर जापर। In the tenure of which Governor General an attempt was made for the first time to codify Hindu and Muslim customary laws? करेक्ट आंसर होची वारेन हेस्टिंग। तेणु वारेन हेस्टिंग इनिशिएटेड द ट्रांसलेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। ही कमिशन्ड द ट्रांसलेशन ऑफ कोड ऑफ जेंटू लॉज जोड़ा होची हिंदू लॉ बोली कहा जाए। एंड दिस वाज डन टू हेल्प द ब्रिटिश जज अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम्स। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सहज क्वेश्चन टा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जोड़ा को इलेक्ट्राल कॉलेज बोली आमे कही थांती। एवं नॉमिनेट मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तेणु द इलेक्शन इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विथ द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। Which part of the constitution contains directive principle of state policy? डीपीएसपी बाबद रे जदि कहबा पार्ट आईवी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते पार्ट आईवी आर्टिकल कहते 36 रु 51 कौटू निया जाइछि इरिश कॉन्स्टिट्यूशन रु एवं दे आर नॉन जस्टिसेबल मीनिंग दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट्स।
The Speaker of lower house of state can step down by submitting his resignation to which of the following authorities? Deputy Speaker of the House. ତେଣୁ similar Deputy Speaker resigns by writing to the Speaker. The residuary powers under the Government of India Act 1935 was given to Secretary to the State, Governor General বা Viceroy, Central Legislature না ব্রিটিশ মোনার্ক? करेक्ट आंसर गवर्नर जनरल बा वाइसरॉय। तेणु 1935 एक्ट वेस्टेड द रेसिडुअल पावर्स इन द गवर्नर जनरल। अनलाइक मॉडर्न इंडिया where it lies with the parliament, the British kept this power centralized in executive. In which case the Supreme Court characterized federalism as its basic feature of the Constitution of India? केशवानंद भारती केस, बुमाई केस, LIC ऑफ इंडिया केस ना मिनरवा मिल केस? पासवर्ड @90 नेक्स्ट आउ गोटे रहा लास्ट को कहबी है 90 लास्ट को आउ गोटे कहबी एटा हूँ तुमर बुमाई केस जोड़ा 1994 फेडरलिज्म वाज affirmed as the basic feature and the judge restricted the arbitrary dismissal of state government under Article 356. तेणु it is stated that states are not mere appendage of the union. The office of vice president is modeled on the lines of which country's vice president? Japan, Australia, America, Russia. कौन हम करेक्ट आंसर? अमेरिका हम करेक्ट आंसर। तेणु इंडियन वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज हेवीली इंस्पायर्ड बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इन बोथ कंट्रीज द वाइस प्रेसिडेंट सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस है ना। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट कमिटी? किए? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ लोकसभा किए अपॉइंट करती? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तेणु एस्टिमेट कमिटी कथा जदि कहबा 30 जन मेंबर अछंती ऑल स्ट्रिक्टली फ्रॉम कोटू लोकसभा कोटू रे लोकसभा। तेणु द चेयरमैन इज इनवेरिएबली चूजन फ्रॉम द रूलिंग पार्टी
Aravalli Range is the example of which type of mountains? ଆରାବଳିଟା ଆମେ କହିପାରିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମାଉଣ୍ଟେନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍? এটা হচ্ছে রেসিডুয়াল মাউন্টেন, সমস্তে জানিছ। oldest folded mountain now reduced to the residual mountain due to the million of years of erosion and they stretch from Gujarat to Delhi. आ गुरु शिखरटा हूँ तुम हाएस्ट पीक ऑफ आरावली रेंज। तीस्ता इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तीस्ता तीस्ता कथा जदि आम कहबा तीस्ता तीस्ताटा हूँ कहार? ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र। तेणु तीस्ता ओरिजिनेट्स इन हिमालयज एंड जॉइन्स ब्रह्मपुत्र कौटी? बांग्लादेश रे। तेणु इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बेंगल। तेणु द रिवर इज ए मेजर सोर्स ऑफ वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया आउ गोटे कार बांग्लादेश। बुझला? नेक्स्ट क्वेश्चन, जदि पूरा थ्योरी मैपिंग सहित पढ़ाई चाहूच जॉइन कर 300 टंकार जॉइन करके देख सार केते सुंदर मैपिंग करके पढ़ाई। नेक्स्ट, where in the country the चंद्रप्रभा sanctuary located? कोउठी अछि? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सबू गड़े प्रदेश रे छिड़िला। को करेक्ट आंसर कौन हम? राकेश कुमार बारिक। करेक्ट आंसर होची उत्तर प्रदेश। तेणु चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जदि आम कहबा एटा उत्तर प्रदेश रे अछि एवं कोउटी ना चंदाउली डिस्ट्रिक्ट जोटा कि वाराणसी निकट रे अवस्थित। एंड इट वाज ओरिजिनली एस्टाब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एशियाटिक लायन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पियरल सिटी? कहा को कहा जाए पियरल सिटी? पियरल सिटी कहा को कहा जाए? पियरल सिटी कहा को कहा जाए? पियरल सिटी हूँ तुम हैदराबाद। कहीं ना ड्यू टू द बूमिंग पियरल प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री अंडर द निजाम्स। आ गोटे मन रख टोटी कोरिन जो रही टोटी कोरिन एको भी कह जाए पियर सिटी ऑफ तमिलनाडु। The tropical cyclones do not occur close to the equator. कहीं? Because
कौन बरे करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए जो वीक कोरियलिस फोर्स। तेणु आम जदि कोरियलिस फोर्स कथा कहबा इक्वेटर निकट से कौन होता है जीरो होता है। तेणु दिस फोर्स इज नेसेसरी टू क्रिएट स्पिनिंग मोशन रिक्वायर्ड फॉर ए साइक्लोन। तेणु हैंड साइक्लोन रेयरली फॉर्म विद इन द 5 डिग्री लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। Which of the following does not affect the visibility on the ground? Mist, fog, haze, dew. The correct answer होची dew is the correct answer. Dew forms on surface and does not flow in the air to obstruct vision. आउ जदि आम मिस्ट कथा कहबा फॉग कथा कहबा हेज कथा कहबा consist of suspended particle or water droplet in the atmosphere. तेणु dew points determine when water vapor will condense. Which of the following methods is the most appropriate to show the relief? आसीगला मैप रू क्वेश्चन। तेणु जी पूरा डिटेल्स फंडामेंटल बुझापी चाहूच जॉइन कर आम सहित एटा करेक्ट आंसर हूँ तुम हम हूँ कंटर्स। तेणु जो रहा कंटर लाइन्स आर द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट एलिवेशन एंड रिलीफ ऑन ए मैप। तेणु दे कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन। तेणु क्लोज कंटर लाइन्स इंडिकेट स्टीप स्लूप आउ जदि स्पेस आउट लाइन्स जदि अधिक स्पेस रहा ताले सेटा होची तमर जेंटल स्लूप को रिप्रेजेंट करिवो। अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल शो 5:30 AM व्हेन इट इज 12टा मिडनाइट एट ग्रीनविच। किए कहबो एटा एथर ज्योग्राफी रो प्रॉब्लम पकइबो मु कहि रखुची प्रॉब्लमेटिक पूरा विद्यासार सिस्टमेटिक बुझेबे कहते बुझीगला। बेसी क्वेश्चन नहीं आउ 2-4टा क्वेश्चन अच्छी निवेदिता मैडम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अब करेक्ट आंसर जोड़ा हूँ न्यू दिल्ली। है तेणु आम जदि कहबा टाइम डिफरेंस इज बेस्ड ऑन 82 डिग्री 5 मिनिट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द मिर्जापुर। तेणु व्हेन इट इज मिडनाइट एट ग्रीनविच इट इज 5:30 AM इन न्यू दिल्ली। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंड स्टेज थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? एथिरे लो डेथ रेट आउ हाई बार्थ रेट को गुरुत्व दिया जाइथिला। व्हाट इज द मिनिमम मनी वैल्यू फिक्स्ड फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन अर्बन एरियाज फॉर द ईयर 2000 मसीहा कथा जदि आम पर्टिकुलर कहबा
प्रणाम प्रणाम समस्त को। तो करेक्ट आंसर कौन हम 454 टंका रहिबो। एटा किए ना लकड़ीवाला कमिटी बा प्लानिंग कमिशन एटा सेट करिथिला एवं फॉर द ईयर 1999 रु 2000 इट वाज सेट अराउंड केते टंका 454 टंका फॉर अर्बन एरियाज। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कोटा गोटे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम नुहे एई भलिया पकाइबो प्रोग्राम गुडा को तो करेक्ट आंसर कौन हम NSSO जोड़ा हूँ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। एटा तो गोटे ऑर्गेनाइजेशन जोटा कि सर्वे कंडक्ट करे पॉवर्टी प्रोग्राम नुहे बुझीपार कि नहीं। एवं मन रखिबो NSSO डाटा इज ऑफन यूज टू मेजर द पॉवर्टी नॉट एलिवेट इट डायरेक्टली। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स explain the Kerala's highest value of human development index। लास्ट पासवर्ड होची लास्ट डिजिट कही दउची 4। कमेंट रे कहीं भी लिखिबनी पासवर्ड टी कहीं भी कमेंट रे लिखिबो नहीं। तेणु करेक्ट आंसर कौन हम हाईएस्ट लिटरेसी। वेरी गुड। जो माने जॉइन करने चाहूच जॉइन कर नंबर रे मते मेसेज कर जदि डिटेल्स इकोनॉमिक्स पढ़ापी चाहूच। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कमोडिटी मनी। बोथ एंड बी। तेणु कमोडिटी मनी हैज इंट्रिंसिक वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मटेरियल इट इज मेड ऑफ। तेणु गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आर क्लासिक एग्जांपल्स। आ फियाट मनी होची लाइक मॉडर्न पेपर बिल्स हैज वैल्यू ओनली बाय द गवर्नमेंट कौन डिक्री। How RBI measures money supply। केमिति बेस मनी लिक्विडिटी मनी ना सर्टिफिकेट डिपॉजिट ना ऑल ऑफ दिस। ये सब गुड़ाक आपणकर M1 M2 M3 M4। तेणु बेस मनी हूँ M0 फॉर्म दी फाउंडेशन ऑफ द सप्लाई। आउ जो रहा ब्रॉड मनी M3 इज मोस्ट वाइडली यूज मेजर इन इंडिया। द एवरेज कंजम्पशन ऑफ PDS गेन ऑफ ऑल इंडिया लेवल इज। PM पर मंथ। करेक्ट आंसर होची 5 kg पर पर्सन पर मंथ। एटा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अनुसार बुझेगा कि नहीं
आउ अंतर्दय अन्न योजना जदि थी ताले सेटा 35 किलो पाइब पर फैमिली। से फैमिली रे जते जन था 10 जन था 15 जन था 50 जन था जते जन रहिले भी 35 किलो मिल बुझेला बुझे। थैंक यू। ये थिला आपण मानक पई किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तेणु मु कही रखुची एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पूर्वर आपण मानक दरकार कौन थ्योरी। तेणु थ्योरी पाई आपण जदि चिंतार अछंती ताहले हमर विद्यासार पढ़ाउचंती डेली क्लास होउची लाइव क्लास लाइव अटेंड न करि परिले रिकॉर्डिंग बुझिला। तेणु सारंकर डेमो क्लास आपण माने देखिकी जॉइन करि परिबे। सार सॉइल पढ़ाइचंती हिस्ट्री रे पढ़ाइचंती ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी पढ़ाइचंती बुझिला कि नहीं। तेणु जदि इकोनॉमिक्स रे डेमो क्लास दरकार मते कमेंट सेक्शन रे भी माने मते व्हाट्सएप भी करि परिबो सार इकोनॉमिक्स रो गुडे डेमो क्लास दियंतु डेमो क्लास भी मु व्हाट्सएप रे प्रोवाइड करि परिबी। तेणु जॉइन जदि करबा पई चाहुचो जॉइन करि परिबो एई नंबर रे मते व्हाट्सएप करिवो सबु। आउ 300 टंका रे तुमको टॉपिक वाइज एमसीक्यू रो पीडीएफ वीडियो कई भी देबेनी बुझिला कि नहीं। तेणु जदि जॉइन करबा पई चाहुचो ए नंबर रे मते व्हाट्सएप करो। आउ आज रो पीडीएफ जदि तुम माने नबा पई चाहुचो ताहले आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करो। टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करो एटा को स्कैन करिकी जॉइन करि परिबो किंबा @ चिन्ह देकी लिखि परिबो बा डिस्क्रिप्शन ले मु लिंक दे देछि सीधा सळक जाईकी जॉइन करि परिबो। तेणु जदि किछि भी प्रॉब्लम होउछि मते सीधा सळक कॉल करि परिबो। रहिली पुणी देखा आपण मानक सहित आ गुटे क्लास।